Namaskar students, this video for class 10th and today we are going to start a lesson number 9, Forest and Wildlife Resources. In 9th standard you have studied this both topic in a different lesson. In 9th standard lesson number 17, Vegetation, and lesson number 19, Wildlife. This combination of these two topics has given over here the forest, vegetation and wildlife resources. So let's start the lesson. The progress of man, the existence of man, the development of man is dependent on the resources. By the using of different types of the resources, we have done our development, we have done our progress. So there are different types of the resources, and what is the resources we have already studied in the 8th chapter. Among them, the forest is a very important, and the forest is a very essential resources for the mankind, for the humankind. Different types of the forest products we have used, and we have done our progress, and we have done our development. So first of all, what is a forest? Forest, that means a group of trees. The forest, that means the accumulation of the different types of the trees, different types of the shrubs, grass, the accumulation of the all these things, that is called the forest. And all these different types of the trees and grass and shrubs growing then without the human effort, they are growing the naturally, and that is called the forest. In today the India, the naturally forests are very लेस, बहुत ही अभी हम कम बचे हमारे भारत के अंदर. अगर देखा जाए भारत के अंदर नेचुरली द रियल फॉरेस्ट ओनली इन द हिमालय रीजन, इन सुंदरबन रीजन एंड सम रीजन ऑफ द थार डेजर्ट. सो दिस इज द रिगार्डिंग अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ द लेसन. रिसोर्सेज के बारे में हम, फॉरेस्ट के बारे में हम पढ़ेंगे और उसके बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ पे हम कलेक्ट करेंगे. So the next topic is regarding about the classification of the forest. In the 9th standard you have studied the classification of the forest on the basis of the climate. The climate basis you have already studied. Different types of the forest. The tropical forest, different types of the forest you have already studied in the 9th standard on the basis of their climate. In this lesson we will study the classification on the basis of ownership, on the basis of administration, and on the basis of different types of the collections. So we will study here the different types of the forest on the basis of, first of all, there is a administrations. On the administration point of view, the forest is divided into three parts: reserved forest, protected forest and unclassified forest. On the administration point of view. So first of all, what is a reserved forest? Reserved forest, that means this forest is totally directed, direct under the government, state government or the central government. There is a very strictly restrictions of grazing activity, collection of woods. There is a strictly ban on that types of the different activity, collection of woods, lumbering activity, grazing activity. So these are called the reserved forest. Second number, the protected forest. It is looked after by the administration of local people, looked after by the administration also, and the local people are getting the permit regarding about the collection of woods and the grazing activity, but in रूल्स एंड रेगुलेशंस. द लोकल पीपल, यहाँ पे लोकल पीपल जो है वुड कलेक्शन कर सकते हैं, ग्रेजिंग एक्टिविटी, वहां पे एनिमल जो है उनके ग्रेजिंग एक्टिविटी कर सकते हैं, बट विथ सम रिस्ट्रिक्शंस एंड विदाउट हार्म द ट्रीज. परमिशन है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो हैपेजेडली और कहीं मतलब इस प्रकार से फॉरेस्ट में कुछ भी वो कर सकते हैं. इट इज ऑल्सो द विथ सम रिस्ट्रिक्शंस they get the permission. Third number, unclassified forest. Unclassified forest, that means not classified forest in our India, that is called the unclassified forest. And in this forest
there is no any kind of the restrictions of felling of the tree or the grazing activity. उसके अंदर कोई भी प्रकार का नियंत्रण नहीं है, जो मर्जी आए, जो लोग जैसा चाहे इस फॉरेस्ट के अंदर कर सकते हैं. दैट इज कॉल्ड द अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट. सो एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू देयर आर थ्री टाइप्स: रिजर्व्ड फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एंड अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट. More we will study regarding about the ownership, administration and management. उसके और भी हम ज्यादा अगर डिटेल में जाए तो ऑनरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से, एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एंड मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से we will study the classification of the forest. So first of all, that is the state forest. The management and administration point of view, that is the state government, the state forest. नाम से ही पता चल जाता है कि this forest is under look after by the central government or the state government. वो डायरेक्ट गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहता है, डायरेक्ट गवर्नमेंट के अंडर में रहता है. सेकेंड नंबर, द कम्युनिटी फॉरेस्ट. The community forest, that is look after by the local self government. And what is the local self government? You have already studied in the civics part of lesson in the 9th standard. Local self government means in the urban area municipality and municipal corporation, and in rural area gram panchayat, taluka panchayat, district panchayat. These are called the local self government, जिसको हम बोलते हैं स्थानिक स्वराज्य की अलग अलग संस्थाएं. शहर के लेवल पे होता है दो, म्यूनिसिपालिटी एंड म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन. बड़ा जो शहर है उसको दर्जा मिलता है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, और छोटा टाउन और स्मॉल सिटी दैट इज कॉल्ड द म्यूनिसिपालिटी. तो शहरी लेवल पे ये दो है, और रूरल लेवल पे, गांव के लेवल पे, यू ऑल ऑफ यू नो, ग्राम पंचायत, तालुका पंचायत एंड डिस्ट्रिक्ट पंचायत. सो दीज आर द 5 द इंस्टीट्यूशंस ऑफ द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. And community forest is controlled, it is looked after by the local self government of our country. And third number is the private forest. The private forest is the individual forest looked after by some private institutions. In these types of the forest we can see in our India, in Odisha, Meghalaya, Punjab and Himachal Pradesh. And some of this forest is the barren forest also, because of it is not looked after by the properly. So this is regarding about the state forest, community forest and private forest. Now the topic is the deforestation. What is the meaning of the deforestation? Deforestation, that means the destructions of the forest. Forest का हमने destructions किया. Forest जो है उसको ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए हमने उसका डिस्ट्रक्शन किया. एंड दिस इज द ग्लोबल प्रॉब्लम आल्सो, द डिस्ट्रक्शंस ऑफ द फॉरेस्ट. एंड दिस डिस्ट्रक्शन बिकॉज ऑफ द रिजल्ट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द मैन. इंसान ने अपनी तरक्की के लिए, अपने डेवलपमेंट के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए बहुत सारे जो रोड, रास्ते और बहुत सारे डेवलपमेंट के लिए हमने सबसे पहला नेचर का ये रिसोर्सेज जो फॉरेस्ट है उसको सैक्रिफाइस, उसको हमने डिस्ट्रॉय किया, उसका हमने डिस्ट्रक्शन किया. एंड दैट इज कॉल्ड द डिफॉरेस्टेशन. ये जंगलों को काटना और वहां पे डेवलपमेंट करना, जंगलों को काट के वहां पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ द डेवलपमेंट, दैट इज कॉल्ड द डिफॉरेस्टेशन. नाउ व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन? डिफॉरेस्टेशन की असर क्या होगी? Very harmful this thing and very negative effect in all over the world. The impact of deforestation, आप लोग सब जानते हो कि नेचुरली ऑक्सीजन हमको मिलता है ट्रीज में से, एंड बिकॉज ऑफ द कटिंग ऑफ द ट्रीज द CO2 लेवल ऑफ द वर्ल्ड ऑल्सो एंड कंट्री ऑल्सो इज द इंक्रीजिंग. CO2 लेवल, कार्बन डाइऑक्साइड जो लेवल है वो इंक्रीज होता है, and because of the carbon dioxide level increasing, there is the global warming in all over the world and in our India also. So the greenhouse effect is because of this, the global warming, the greenhouse effect. Greenhouse effect 8th स्टैंडर्ड में आपने 7 और 8 स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा. ग्रीन हाउस इफेक्ट, एक ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, हम जो खेतों के अंदर एग्रीकल्चर के लिए एक ग्लास का पूरा
फार्म जो बना के उस क्रॉप के ऊपर ऐसे ग्लास का ऊपर पूरा एक कवरिंग करके वहां पे हम करते हैं, दैट इज अ ग्रीन हाउस इफेक्ट, कि जो सन रेज आते हैं वो ग्लास के ऊपर पड़ते हैं और उसकी अंदर इसकी वजह से जो अंदर की जो गर्मी है वो अंदर ही रहती है, दैट इज कॉल्ड द ग्रीन हाउस इफेक्ट। एंड दैट टाइप्स ऑफ द इफेक्ट इज डन इन द वर्ल्ड ऑल्सो, दुनिया के अंदर भी इस प्रकार का होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट। फॉर एग्जाम्पल ये वर्ल्ड है और जो भी सन रेज जो दुनिया के ऊपर गिरते हैं, जो वर्ल्ड के ऊपर सन रेज जो है वो एक्चुअली वो रिफ्लेक्शन होके वापस जाने चाहिए, बट दिस थिंग्स इज नॉट हैपन बिकॉज ऑफ द CO2 लेवल, बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग ऑफ दिस टाइप्स ऑफ द गैसेस। इसकी वजह से ये जो सारे जो गैसेस है वो अर्थ में ही एब्जॉर्ब हो जाते हैं। सो दैट्स व्हाई द जो what is the increasing, and that problem is called the global warming, and because of this greenhouse, this is called the greenhouse effect. So, this greenhouse effect is done due to the cutting of the forest, due to the destructions of the forest. Because of cutting of the forest, the covering of the earth is removed, so that's why the soil eroded is the happen. आप लोग जानते हो कि जे फॉरेस्ट के अंदर जैसे अगर बारिश गिरती है तो these are the trees are the covering of the earth, trees are the covering of the soil. अब ये फॉरेस्ट ही नहीं रहेगा तो डायरेक्ट जो सॉइल, डायरेक्ट जो बारिश है वो अर्थ के जो लिथोस्फीयर के ऊपर, जमीन के ऊपर, सॉइल के ऊपर गिरेगी। सो दैट्स व्हाई द सॉइल इज द इरोडेड, सो दैट्स व्हाई द फर्टिलिटी ऑफ द लैंड इज द डिक्रीजिंग, the fertility of the farming land is the decreasing because of the soil erosion. ये हमने पढ़ा एक लेसन में ऑल्सो कि फर्टिलिटी जो सॉइल की होती है वो कम हो जाती है ड्यू टू दिस डिफॉरेस्टेशन। एंड दिस टाइप्स ऑफ द डिफॉरेस्टेशन इज द लार्जली अकर इन आवर कंट्री इन द पेनिनसुलर इंडिया। भारत का जो पेनिनसुलर पार्ट है, मतलब दक्षिण भारत, द साउथ इंडिया, द पेनिनसुलर, दैट इज द डिफॉरेस्टेशन इज द मोर इन द पेनिनसुलर ऑफ the India. Second thing, the impact of the deforestation. Due to the deforestation, the living organism, the animals, wild animals and all the animals, those who are living in this forest, lost their habitats, lost their house, we can say. वो अपना deforestation हो जाता है, इसकी वजह से जिस जंगल के अंदर, जो फॉरेस्ट के अंदर जो एनिमल्स रहते हैं, they lost their habitats, वो अपने घर को खो देते हैं। सो दैट्स व्हाई दे आर डायरेक्ट कनेक्टिंग विद द ह्यूमन, द एनिमल्स इन द ह्यूमन अप्रोच इन द अर्बन एरिया ऑल्सो, इन द रूरल एरिया ऑल्सो। इसकी वजह से ये जो ऑल द एनिमल्स हैव लॉस्ट देयर हैबिटेट्स, क्योंकि फॉरेस्ट जो वाइल्ड लाइफ का जो घर है, जिसको हम बोलते हैं वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, प्राणियों का, पक्षियों का, एनिमल्स, बर्ड्स, ये सब का जो घर है वो है फॉरेस्ट, और उनका ये जो घर छिन गया। सो दैट्स व्हाई उन्होंने ह्यूमन एरिया के ऊपर अपना अप्रोच करना शुरू कर दिया। एंड देन आफ्टर वी आर डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन विद द एनिमल्स। और आपने भी कभी कभी ऐसे न्यूज़पेपर के अंदर और कभी कभी टीवी में ऐसे न्यूज में आपने सुना होगा कि कोई गांव के अंदर, खास करके हमारे सौराष्ट्र के अंदर जो सारे विलेजेस है, सम एनिमल्स एंटरिंग द वाइल्ड एनिमल्स ऑल्सो, जैसे लायन है, कभी कभी टाइगर है, तो ये लेपर्ड है, दैट टाइप्स ऑफ द एनिमल्स एंटरिंग इन द डोमेस्टिक एरिया, इन द विलेज एरिया, रूरल एरिया एंड ऑल्सो इन द अर्बन एरिया, एंड द किलिंग द पीपल एंड किलिंग द डोमेस्टिक एनिमल्स, किलिंग द डोमेस्टिक एनिमल्स ऑफ द शेफर्ड, कि भरवाड़ लोगों का, वहां के लोकल लोगों के जो डोमेस्टिक एनिमल्स है, गाय है, भैंस है, भेड़ बकरिया है, उनको वो मार गिराते हैं, या तो ह्यूमन के ऊपर भी वो अटैक करते हैं। आपने सुना होगा कि कोई लेपर्ड है वो घुस गया कोई गांव के अंदर, कोई शहर के अंदर, और उसने इंसानों को और कुछ डोमेस्टिक एनिमल्स को नुकसान पहुंचाया। सो दिस टाइप्स ऑफ द थिंग्स हैपन ड्यू टू बिकॉज ऑफ द डिफॉरेस्टेशन। सो दीज आर द इम्पैक्ट ऑफ द डिफॉरेस्टेशन. So this is the regarding about the topic of the lesson number 9, forest and wildlife resources.
So first of all, we will discuss regarding about the forest. In the next video, we will study the remedies of the what is the remedies to preservation of the forest, and then after we will study regarding about the wildlife and wildlife of resources. Thank you.